करीब वर्चुअल मशीन ऊपर राइट जो वर्चुअल मशीन्स का हमें वर्चुअल जो मशीन्स क्रिएट करबा एडब्ल्यूएस रे कोन होची ना गोटे सर्विस अछि जोटा कुआ जाय EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बा इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट तुम जाबी कहि परियो तो या EC2 सर्विस जोटा अछि थ्रू EC यूजिंग EC2 सर्विसेस वी आर गोइंग टू क्रिएट वर्चुअल मशीन्स बा EC2 instances तो AWS रे ताकू कुआ होची इंस्टेंस ओके EC2 instances तो आमे देखिबा केमती आमे EC2 instance क्रिएट करि परिबा बा वर्चुअल मशीन क्रिएट करि परिबा तो बोथ वेज रे आमे देखिबा बोथ केमती लिनक्स मशीन आउ केमती विंडोज मशीन आमे क्रिएट करिबा तो ता पूर्वरु before we start creating the virtual machine right doing the lab class so what we would do like we'll just go through the concept of EC2 instances. What are the features? What is EC2 instances actually? What are the features EC2 service provides? And how we are going to see and what are type of machines and type like instances they are going to provide. Everything we are going to see. Okay. So let's first understand what is Elastic Compute Cloud. So basically, if we see right in AWS, everything will see elastic, right? So elastic in nature, what happens? It expands, right? Also, it squeezes, right? Expands, also it squeezes, right? So that means elastic means the service whatever AWS provides, you can increase as much as possible. You can decrease whenever you need it also. Means based on a requirement, you can increase the size, increase the resources, right? At same time, also, if you don't need, you can decrease it also, right? You can squeeze it also. So that's the nature of elastic, right? So what is now EC? So what is EC2? Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2 is a web service. Everything, all services are web service, right? Web service that provides secure, resizable compute capacity in the cloud. What it provides? It provides secure, resizable compute capacity in the cloud. Okay. So there are various EC2 options available there. Like we have on-demand, reserved, spot, and dedicated hosts, right? So on-demand केतबेले यूज करावे ना जेतबेले तुमको किछि फिक्स रेट रे किछि यूज करिवार अछि जे ऑन डिमांड बेस्ड तमे प्राइस पे करियो राइट इट अलाउज यू टू पे फिक्स्ड रेट बाय द आवर और बाय द सेकंड with no commitment, right? Allow you to pay fixed rate by the hour or by the second with no commitment. Reserve means provides you the with capacity for the reservations, right? जदि कि तमे देखिथियो आमे तो रिजर्व करू कुछि दिन से राइट इज रिजर्व रे कोन होछि ना किछि बेसिकली तमे कोन तो रेंट गोटे नॉर्मल जदि गोटे हाउस लीज नवा ता भीतर डिफरेंस रहउछि राइट रेंट नेले कोन होछि हमें पर मंथ जदि कि हमें यूज करिबा से हिसाब रे हमें रेंट दबा राइट जदि हमें लॉन्ग टर्म पर्पस रे राइट लॉन्ग टर्म पर्पस रे हमें किछि दिन से नउछि ताकू हमें कोन करबे रिजर्व करके रखिबा राइट जे एटा हमें 100% हमें वी आर गोइंग टू यूज दैट राइट त हमको हमें रिजर्व करके रखिबा राइट सेकंड what's happened there seems some issues with Anupam.
Can you try? Okay. Let him try. So, ଆମେ କଣ କରିବା? The reserved instance ଆମେ ଚାଲୁ 1 year ବା 3 year terms ନବ spot instance enable you to bid whatever price ଯାହା ବି price ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଆମେ bid କରିପାରିବା right bid ହିସାବରେ ଯାହା ବି price ଥିବ ସେଟା ଆମେ ନବା the dedicated host like the private server right physical EC2 server dedicated for use dedicated host can help you to reduce allowing to user existing server bound server licenses ତା ବିଷୟରେ ଆମେ complete details ରେ ଜାଣିବା next what is on demand right so basically on demand it's perfect for users that want the low cost and flexibility of Amazon EC2. So whenever you are going to create Amazon EC2 instances, remember guys, you have to remember these options, right? EC2 options. What are the options it provides? On demand କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯିବ ତ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଶିଖୁଛେ ଯେତିକି କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ତ ସେ ସବୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଇଡିଆସ୍ ଥିବା ଦରକାର ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ସର୍ଭିସଟା କ'ଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ କୋଉ ସର୍ଭିସଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା ରାଇଟ୍ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଇଡିଆସ୍ ତମକୁ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ୟୁ perfect right so on demand ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା on demand machine ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି low cost ଆଉ flexible EC2 instances without any front end payment ଆମକୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ front end immediately payment କରିବାର ନାହିଁ ବା long term commitment କିଛି ଆମର ନାହିଁ ଯେ ମତେ କ'ଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ machine ମତେ immediately ଗୋଟେ project ଆସିଲା ମତେ କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ AWS ରେ ଗୋଟେ machine ଆଣିଲି ଭାରି right तो मैं यूज कर ली जितनी पैसा ला पेमेंट कर दली मशीन आउ दरकार नहीं क्लोज कर दली बस then you can go with on demand बुझी पालो then applications with short term right short term spiky and unpredictable workloads spiky means you don't know when your workload increases right predictable unpredictable workload तमे जानी ना केतबेले तमर प्रेडिक्शंस माने अनप्रेडिक्टेबल तमे जानना केतबेले वर्कलोड बढ़िबो कि कमिबो तो से टाइम रे तमे जदी चाहूच तमर जहाँ भी मशीन्स अछि एप्लीकेशंस अछि प्रोडक्ट तमे होस्ट करछ कस्टमर जंदी इंपैक्टेड हेबनी तमर किछ इंटरप्ट हबनी तो सेते तमे ऑन डिमांड इमीडिएटली यू कैन गो अहेड एंड गेट द ऑन डिमांड मशीन applications being developed and tested on Amazon तो बेसिकली कोन होची तमे यदि किछ एप्लीकेशन डेवलप करूछ राइट नॉर्मली कोन तमे जदि डेवलपर गोटे बेसिकली गोटे डेवलपर को कोन दरकार गोटे एनवायरनमेंट दरकार गोटे मशीन दरकार गोटे प्लेटफॉर्म दरकार राइट गोटे प्लेटफॉर्म गोटे मशीन्स दरकार आइदर विंडोज और लाइनक्स मशीन्स जो तरी से तार कोड लिखि परिबो गोटे एप्लीकेशन बनै परिबो राइट तो सेटा कोन application either जे लैपटॉप रे यूज करि परे मोस्ट ऑफ द कंपनी कोन होचे आमे देखिथिबो जो माने कंपनी रे काम करछो राइट तो तमे कोन करछो तुम गोटे मशीन दिया हिथिबो गोटे लैपटॉप दिया हिथिबो बा डेस्कटॉप दिया हिथिबो तो सेटा विंडोज रो थाई पारे राइट देन तमे कोन करिवो ना तांकर जो सर्वर दबो तमे सर्वर रे काम करिवो थ्रू आरडीपी बा आरडीसी तमे कोन करबो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट करिकरी काम करिवो थ्रू वीपीएन बा VPC बा VPN रे कनेक्ट करिके आमे काम करू राइट सेटा कोन ओडे वर्चुअल मशीन जोटा कि आमे कनेक्ट करू VPN रे कनेक्ट करी आमे कोम से मशीन टा कोडी अलगा को सर्वर टा थिबो राइट से सर्वर टा अलगा को कंट्री रे थिबो सेटा आमे कनेक्ट करछो बट सेट मशीन टा समान आनी छथि राइट दैट कुड बी द क्लाउड मशीन राइट तो सेठी कोन कहउछे ना केतबेले मशीन्स तमे देखिथिबो पर्टिकुलर कोन होछ ना जदी गोटे कंपनी रे गोटे डेवलपमेंट गोटे नुवा प्रोडक्ट आसिला डेवलप करियर अछि राइट तो एठी कोन अछि ना तांको दरकार सपोज 5 मेंबर्स 5 डेवलपर दरकार जे कि से प्रोडक्ट रे काम प्रोजेक्ट रे काम करिवे आउ करिवे तो 5 डेवलपर्स मानो मशीन्स दरकार राइट आइदर से माने कोन करिवे पांचटा सिस्टम दे देबे आ गुटे डेवलपमेंट सर्वर से माने कोन करिवे प्रोक्योर करिवे जोटी कि पांच जन यूजर कनेक्ट करिवे ताकू ए सर्वर रे आ तांकर सब जगह कोड ए माने एठी डेवलप करिवे
राइट सेमती सिमिलरली फॉर टेस्टिंग ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ सर्वर नहीं ଯିବା immediately ତାକୁ टेस्ट କରିବା ଆଉ production server but production server should be used for long term तो for productions we cannot go with on demand केतବେଳେ ଯିବା ତାହେଲେ କିଛି डेवलपमेंट କିଛି तमे जानने केतବେଳେ हमକୁ immediately दरकार କିଛି वर्कलोड बढ़ी गला तो immediately ଗୋଟେ मशीन मु नै गली आउ काम कली सेतବେଳେ ଆମେ on demand रे ଯିବା राइट मु काहे तुमके एते बुझौची गाइस देखो प्राय क्लास रे चेष्टा करछि तुमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज शेयर करबा पई राइट तो सेति पई हमर क्लास गोटे डेरी भी होउची तो चाहिले मु गोटे गोटे सर्विस गोटे गोटे दिन रे एक्चुअली सरीबा कथा माने सारी नॉर्मली साथी अंश माने तो वर्तमान मु तुमको कंप्लीट डिटेल्स ये ऑन डिमांड ही 5 मिनिट बुझेलानी राइट तो सही हिसाब रे हम जदी जिबा हमें ठीक है तो मु सेति पई कहूची तमे कंप्लीट देखो हम काहे एते बुझौ जे तमे दि बुझी ठीक से न पारिबो नेक्स्ट फेज रे कोन हबना हमें तो मशीन क्रिएट करबा बहुत किछि काम करबा सिखिबा बा तमे कंपनी जो जानि पारिबोनी एक्चुअल काहे केटा यूज करूची राइट मोर रिक्वायरमेंट कोन राइट सेति पई तुमको बुझिबा को पड़िबो सब तो रिजर्व्ड इंस्टेंस कोन पई यूज होउची रिजर्व इंस्टेंस applications with steady state predictable usage मते गोटे होटल बुक करिवार अछि राइट धरो 25 फेब्रुआरी मोर गोटे सेमिनार अछि एटा कोन 100% predictions done राइट तो मते 100% जीवार अछि तो मु कोन करबी एबेटू कोन करबी गोटे होटल रिजर्व करबी राइट रूम गोटे होटल रिजर्व करबी राइट तो मते एटी सेमिनार अटेंड करिवार अछि सिमिलरली तो मशीन केस रे तमे 100% सियोर जोटा कि तमरो प्रोडक्ट बा एप्लीकेशन जोटा तमे बनौचो सेटा को प्रोडक्शंस रे जीवो प्रोडक्शन को जीवो आउ दैट विल go beyond suppose 10 years or more than that or 5 years more than that even 1 year also so सेही टाइम रे तमे कोन करियो किछि सपोज 10 इयर्स हला तमे 10 वर्ष पई ताकू कोन करियो रिजर्व कर देलो for 10 years you reserve it तो इमीडिएटली हमें किछि किनिबा आ प्राइस दबा आ रिजर्व करिवा भीतर तफात रहउची जे तमे रिजर्व करिवे से कोन किछि डिस्काउंट देबे हम तो हमकु किछि डिस्काउंट मिली परिबो जो प्राइस था एक्चुअली मशीन प्राइस राइट एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर रिजर्व कैपेसिटी यूजर्स कैन मेक अपफ्रंट पेमेंट्स तो हमें जदि तो रिजर्व करूचे तो हमको अपफ्रंट इमीडिएटली पेमेंट करले तो से कोन करबो ना टू रिड्यूस देयर टोटल कंप्यूटिंग कॉस्ट इवन फर्दर जति प्राइस थी तो किछि रिड्यूस करके हमको जे लॉन्ग टर्म पई रिजर्व करचे ऑब्वियसली प्राइस टिके कम आसियो ओके तो कंपनी जो रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे चूज करिवो केते बळे तमे रिजर्व इंस्टेंस नबगता राइट स्पॉट इंस्टेंस applications that have flexible start and end time and that are only feasible for very low compute prices कम पैसा तमे चाहछो then spot instances छियो okay with users with an urgent need for the large amounts of additional computing capacity then you can go with spot instances similarly for dedicated hosts useful for regulatory requirements that may not support multi-tenant virtualizations useful for regulatory requirement and that may not support multi-tenant virtualizations does not support multi-tenant virtualizations तमाने कोन मल्टी टेनेंट माने कोन कहलो what is multi tenant tell me in the real life and then we'll talk about in computing world in technical terms multi tenant means ठीक गोटे जगह रेंट जो होतिबो राइट ओनर आउ टेनेंट थांती ओनर जे रेंट दबो आ जे रेंट रहिबो राइट ताको टेनेंट को जाय तो सिमिलरली मल्टी टेनेंट कोन गोटे जदी हमें जदी एग्जांपल दबा पीजी
जोटा पेइंग गेस्ट पीजी विषय रे राइट गोटे रूम रे सपोज 4 बेड्स अच्छी राइट 4 बेड्स अच्छी 4 persons can stay there तो एटा कोन हे गला केतरा 4 tenants हे गला 4 tenants तार में मल्टी tenants तो multiple people can rent the house right आउ कोन होची ना सिंगल टेनांट रहउची जोटा सिंगल टेनांट रे रहउची जोटा माने कोन तमे गोटे रूम नेलो जोटा कि तमरो कंप्लीट गोटे बेड थिबो जोटा कि डेडिकेटेड फॉर योर यूज ओनली single tenant that is dedicated nobody can access your room without your permissions without your keys but here 4 members can use the same place right multi tenants single tenants only for single use dedicated host tame jeto dedicated host noucho it does not support multi tenant mane से केवल डेडिकेटेड होस्ट तमरी पही हमें तो पब्लिक क्लाउड कथा गाइस कहूचे पब्लिक क्लाउड रे कोन हमें जतो मशीन्स नौचे राइट तो जे कोन से सर्विस प्रोवाइडर्स माने कोन कहूचे ना तांकर किछि कंप्यूटिंग रिसोर्स रो हमको किछि स्पेस रेंट रे दउचंती राइट तो मल्टीपल हम जेतो पब्लिक क्लाउड नौचे तो ऑन डिमांड नै गेले कि किछि रिजर्व नाही या डेडिकेटेड नाही प्राइवेट नाही हमें पब्लिक क्लाउड रो किछि स्पेस न तो कोन बने से गोटे मशीन रे तार resource capacity हिसाब रे so maybe 10 people 10 persons or 10 accounts maybe 15 accounts 20 accounts or 100 accounts based on the capacity they can give you that is multi tenant गोटे मशीन को फिजिकल मशीन को वर्चुअली वर्चुअल 10 टा बा 15 टा वर्चुअल मशीन क्रिएट करिवा से वर्चुअल मशीन की 15 जन कनेक्ट करिवे राइट दैट इज मल्टी टेनेंट the dedicated host जोटा कि privately तम ପାଇଁ केवल machine ता हेतियो केवल only your company can connect to that machines use that machines बुझी पाला completely so great for licensing which does not support multi tenant can be purchased on demand hourly basis can be purchased as a reservation up to 70% off तमे यदि reserve out dedicated host नौचो machines नौचो private then 70 up to 70% off also they can provide with on demand price right very beneficial right okay बुझी पाला options on demand reserved spot dedicated hosts right then there are different EC2 instances different type of EC2 instances तो EC2 instance types or virtual machine VM types तो को टाइप रो मशीन तुमको दरकार अच्छा तो हमें फर्स्ट ना EC2 टाइप्स कौन राइट व्हाट इज डज EC2 provides a wide selection of instance types optimized to fit different use cases मु आपको सिंपल भाषा रे बुझे दोची तमे जतबे तमर गोटे मशीन रिक्वायरमेंट अछि माने गोटे लैपटॉप की डेस्कटॉप रिक्वायरमेंट अछि सपोज तमे गोटे लैपटॉप किनबा उछो कोडी की जीवो इलेक्ट्रॉनिक शॉप को राइट तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप को गला परे तमे जतबे गोटे लैपटॉप किनिबो तो सेठी तमरो माइंड रे आसीबो राइट को लैपटॉप मु नेबी तो माइंड रे केमते तम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमर कोन रिक्वायरमेंट सही हिसाब रे तमे जीवो चूज करबो कोन फर्स्ट चूज करबो को कंपनी प्रोडक्ट कोन राइट ब्रांड चूज करबो को ब्रांड रो कंपनी माने को ब्रांड लैपटॉप को कंपनी रो लैपटॉप राइट तापर तमे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन देखिबो राइट कौन हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस अछि RAM केते अछि राइट तापरे स्टोरेज केते रोची राइट तापरे OS कोन रोची कंप्लीट डिटेल्स चेक करिवो राइट तापरे जाई कि तमे लैपटॉप आनिबो राइट लैपटॉप आनलो तो एठी कोन कलो तमे लैपटॉप रो टाइप्स सिलेक्ट कलो कारण गोटे इलेक्ट्रॉनिक शॉप को जदी लैपटॉप कंपनी शॉप को जीवो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स रे तुमको डिफरेंट टाइप रो मशीन मिलिबो बा डिफरेंट टाइप रो लैपटॉप मिलिबो तो सेटा को एबे हमें कन्वर्ट कर दियो क्लाउड को त हमें तो मशीन नबा यूज करबा बा इंस्टेंसेस नबा त हमको को टाइप रो इंस्टेंस दरकार बुझी पल्लो
को टाइप रो मेमोरी दरकार केते मेमोरी दरकार केते स्टोरेज दरकार कोन ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार कोन प्रोसेसर दरकार सेटा इंस्टेंस टाइप्स ताकू कुआ जाए को टाइप रो इंस्टेंस तमे नबो तो से कोन कला EC2 provides a wide selection of instance types optimized to fit different use cases. Optimized to fit different use cases. Instance types comprise varying combinations of CPU, memory, storage, and network capacity and give you flexibility to choose the appropriate mix of resources of your applications. So it provides you the flexibility to choose a variety range of instance types अच्छी AWS रे EC2 instances ता भितरु तुमको गोटे choose करबा पड़ियो. Each instance type includes one or more instance sizes allowing to scale your resources to the requirements of your target workload. तुम requirement हिसाब रे तमे instance type टा choose करि परिबो. जतले मशीन तमे गोटे virtual machine create करबो कोन प्रोसेसर तुमको दरकार कोन रिसोर्स टाइप तुमको दरकार राइट रिसोर्सेस दरकार सेटा इंस्टेंस टाइप रे सिलेक्ट कले तुमको मिल छ ओके ता विषय हमें जानि ए पर्टिकुलर लिंक ता अछि ता दरे लिंक रे हमें बहुत सारा टाइप्स विषय डिस्कशन करबा लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द थियोरेटिकल पार्ट ओके फाइन EBS परे जिबा लेट्स गो टू द इंस्टेंस टाइप्स ओके इंस्टेंस टाइप जोटा कि हमें वर्तमान कथा हले instance type. Let me go to the instance type. Just click this link. तो हमें EC2 instance type जो हमें कथा होतले बहुत सारा जेमती मुझे कहली many instance types like varieties of instance types they provide. So you can see here they're providing for general purpose compute optimized तम requirement हिसाब रे तमे चूज करिवो तम requirement चूज करिवो जनरल पर्पस पई जदी तमे जाउछो तमे दि लैपटॉप किनिबा जाउछो राइट वेदर तमे लैपटॉप नउछो किछि माने सिंपल वेब डेवलपमेंट पई बा सिंपल खाली ब्राउजिंग पई डाटा एंट्री पई राइट तो खाली ब्राउजिंग आउ डाटा एंट्री आउ सम डॉक्यूमेंट्स बनेया पई तुमको एते हाई पावर लैपटॉप दरकार नै राइट तो जब तुम वेब डेवलपमेंट पर जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करछो बा .NET एप्लीकेशन तो से हिसाब रे कंपैरेटिवली तुम बहुत सारा टूल यूज इंस्टॉल करियो पड़ियो तो तुमको मे बी तमे टिके हायर रेंज ऑफ रिसोर्स लैपटॉप न राइट तो जब तुम गेमिंग पई नउचो जति तमे गेम खेलिबा पई नउचो राइट मे बी तमे गेमिंग लैपटॉप्स पई जाई परियो जोटे हाई रिसोर्सेस हाई कॉस्ट भी तुमको आसीबो राइट तो जेतेबे तमे जिकोन रिक्वायरमेंट तम रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे चूज करिवो राइट तो सही परी exactly same way you have to choose what type of instances you need for your requirement whether you are going for general purpose or you are going for compute optimized memory optimized right general purpose instances provide a balance of compute memory networking resources and can be used for variety of diverse workloads compute जदि किछि कंप्यूट माने कंप्यूटिंग पावर ऊपर दरकार अधिक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस तमे यूज करिया को चाहू छ राइट हाई परफॉर्मेंस देन तमे ऑब्वियसली कोन कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड को जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड करछि कोन compute optimized instances are ideal for compute bound applications that benefit from high performance processors instances belonging to this category are well suited for batch processing workloads media transcoding high performance web servers and all okay so kon feature provide kochi compute optimized powered by custom built AWS Graviton 4 processor 3x CPU virtual CPUs is of those DDR5 5600 memory latest right ये सब details बहुत सारा options तारे रहउची right से परि जति तमे मेमोरी तुमको अधिका दरकार मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज अधिका दरकार स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड ये सब जाई परिबो राइट तो प्रत्येक आमे जोटा देखिलेबे जो
डिफरेंट टाइप रो इंस्टांसेस होची फॉर जनरल पर्पस तुम यूज हिसाब रे नबो जनरल पर्पस रे भी तुम देखिबो एटी डिफरेंट टाइप रो मशीन्स रोची तो तुमको को टाइप रो मशीन्स दरकार राइट तो एटी देखिबो जनरल पर्पस रे एटी अराउंड 20 टाइप्स ऑफ machines they are giving right 20 types of machines they are giving तो तुमको दरकार केमती को टाइप रो मशीन दरकार सपोज तुमको हमको दरकार T2 रो T2 कैटेगरी एटा हला कैटेगरी राइट T2 ए सब हला कैटेगरी ए टाइप रो जनरल पर्पस टाइप रो कैटेगरी हला T2 तो ये कैटेगरी देखो एते इंस्टेंट टाइप अछि T2 कैटेगरी रे ए सब टाइप अछि सेमती T3 कैटेगरी रे ए सब टाइप अछि सेमती M8G कैटेगरी रे ए सब टाइप्स अछि राइट तो तुम सिलेक्ट केमती करबो को टाइप रो तुमको दरकार सपोज मु T2 रु नो स्टार्ट करछि एटी T2 रे तुम देखियो T2 नानो T2 माइक्रो T2 स्मॉल ये सब इंस्टेंस टाइप माने रखता एरा तुम बहुत यूज करबो तो जतबे यूज करबो तुमको सब आइडियाज पळे आसीबो हमें केमती यूज करबा राइट T2 नानो T2 माइक्रो T2 स्मॉल T2 मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एंड ऑल दिस थिंग्स राइट तो ये जो टाइप रो T2 नानो रे कोन दोछि ना गोटे वर्चुअल सीपीयू आउ सीपीयू आवर्स 3 मेमोरी दोछि जोटा कि हम रैम कहउछे रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा कि 0.5 माने हाफ गीगाबाइट राइट तो जदि T2 माइक्रो नबो कोन करछे ठी 1 सीपीयू गोटे सीपीयू दबो गोटे गीगाबाइट ऑफ 1 गीगाबाइट ऑफ मेमोरी सेमती तुमको दी अधिक पावरफुल दरकार टिके तमे T2 एक्स्ट्रा लार्ज नहीं गलो जोटी कि चारटा 4 कोर में सीपीयू देला राइट 4 सीपीयूज आ मेमोरी 16 जीबी नॉर्मली तमे लैपटॉप आइले 8 जीबी रो किबा 16 जीबी रो लैपटॉप आनछो राइट 8 जीबी रो मेमोरी 8 जीबी लैपटॉप बा 16 जीबी लैपटॉप तो तम हिसाब रे तमे केते जीबी रो मशीन्स दरकार तमे जदी ए टाइप टा सिलेक्ट कलो देन बाय डिफॉल्ट तुमको ए टाइप रो मशीन तुमको मिल जिवो सेमते हमको अधिक पावरफुल दरकार देन सपोज मु जदी M8G जीबी राइट तो एठी देखो 198 92 सीपीयू 192 टा वर्चुअल सीपीयू तुमको दरकार जदी दरकार रियली जदी तुमको 32 सीपीयू दरकार है 128 गीगाबाइट रो मेमोरी दरकार देन यू कैन गो विथ दिस सिमिलरली सेमती कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड को पळेबो कंप्यूटर ऑप्टिमाइज रे जो सब कैटेगरी अछि से कैटेगरी सिलेक्ट कलो तो तुमको फर्स्ट को कैटेगरी कोन दरकार फर्स्ट थिंग देखो एवरीथिंग इज देयर राइट तो तुमको कोन करियर अछि तुमको खाली तुम रिक्वायरमेंट को भलो भाबे बुझिबार अछि say after you understand your requirement fully what you have to do you have to just go to this instance types and go to this AWS market and just look out for the services type of instances what type of virtual machines you need right then you have to go for that types right guys can you hear me yes okay so हमें कौन करबे इंस्टेंस साइज ये सब साइज बा टाइप रो इंस्टेंस आसला तो कंप्लीट जहाँ भी तुमको दरकार सही हिसाब तुम आसो चेक कर को टाइप रो तुमको दरकार तो ता पूर्व तुमको बुझिबार अछि को टाइप रो तुमको मशीन्स दरकार राइट आइडियाज मिल गला को टाइप रो कोन केमती मशीन्स तुम दरकार राइट देन नेक्स्ट हमें कोन करबा जानिबा देखो फर्स्ट हम कोन कर हम जानि गले को टाइप रो सपोज ए टाइप हम दरकार हमको एतिकटा सीपीयू दरकार एतिकटा मेमोरी दरकार राइट बट स्टोरेज विषय हमें जानिबा स्टोरेज केमती हमें सिलेक्ट करबा हमें जानि गले मेमोरी इंस्टेंस मशीन क्रिएट कले हमको कोड रैम केते दरकार आउ मेमोरी केते दरकार आउ वर्चुअल सीपीयू केते दरकार हमें कोन कर एटा सिलेक्ट कले हमको मिल जिवो कोन इंस्टेंस टाइप टा को टाइप रो इंस्टेंस तुमको दरकार राइट कैटेगरी की जाई से पर्टिकुलर कैटेगरी जीवो कैटेगरी रो तुमको मिल जिवो को इंस्टेंस टाइप तुमको दरकार से हिसाब रे तमे थोड़े सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोन करियो से एग्जैक्टली सब जगह फाइंड आउट करी तार कॉस्ट
हिसाब रे रिक्वायरमेंट हिसाब रे कंपनी कॉस्ट हिसाब रे से डिजाइन करियो राइट तो एटा हला हमर कंप्यूट रिसोर्स ऊपर मिले देन स्टोरेज ऊपर हमें देखिबा स्टोरेज को हमें गोटे जोड़ा AWS रे प्रोवाइड करछे एटा कोजे EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर जेमति कि हमें गोटे स्टोरेज पड़ले कोन S3 S3 टा को टाइप रो स्टोरेज Subhasri, what type of storage S3 is? What type of storage S3? That is object-based storage. Object-based storage. So, Anupam, can you tell me why it is object-based storage? What is object-based storage? It's actually Why we say object-based storage? It's actually can only store the file and file type of data, not can not operate anything like. Yes. So we cannot install anything. It cannot be bootable, right? S3 cannot be bootable. We cannot store. We cannot install anything. Only we can store the data, right? Only we can store the objects. That's why S3 is an object-based storage. S3 is an object-based storage. Similarly, हमें आउ गोटे स्टोरेज पढ़िबा जोटा कि हमर EC2 रे ही यूज हो कहजे EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एटा हला ब्लॉक स्टोरेज रे तो ब्लॉक स्टोरेज रे काम को टाइप रो ब्लॉक स्टोरेज केमती यूज करबो केमती टाइप रो सिलेक्ट करबो राइट ता विषय हम ठीक जानबो इस EBS ऊपर राइट सो what is EBS? EBS stands for elastic block store. Elastic block store. So what it does, it allows you to create storage volumes and attach them to Amazon EC2 and attach them to Amazon EC2. So once attached, you can create a file system on top of these volumes, run a database, use them for any way what you need as like you use for the block device. So Amazon EBS volumes are placed in a specific availability zone where they are automatically replicated to protect you from the failure of a single component. A single component of failure विषय में परे जानबा माने रखो हमें तो EBS storage नबो by automatically से कोन करे गोटे availability zone रे रखिबो right so availability zone what is availability zone It stores the data center. Yes, it's a physical location which holds one or multiple data center, right? It's a physical location which holds one or multiple data centers, right? जो data center है हमारा storage EBS volume हमें create कले store है कि रहेगा ଗୋଟେ availability zone रे तो EBS volume टा कौन होची हमको allow करची storage volume create करिवा तो हमें तो गोटे लैपटॉप किणुचे लैपटॉप रो गोटे रोजी स्टोरेज सिस्टम राइट जोटा कि हमर SSD स्टोरेज आज आगुर तला SSD स्टोरेज हार्ड डिस्क HDD स्टोरेज नाउ SSD स्टोरेज सॉलिड स्टेट ड्राइव आसी गलानी जो तरी कि हमें कोन करछ ना हमर SSD हो कि जा भी हो स्टोरेज गोटे डिस्क जो हार्ड डिस्क हमें जो कहूचे हार्ड डिस्क हो बे सॉलिड डिस्क हो सेते कोन होछ ना किछि हमें देखिथियो हमें सब ड्राइव रे कोन करछ ना ताकू पार्टीशंस कर देगिरी सी ड्राइव रोको हमर इंस्टॉलेशंस पाई और डी आ अलगा जो बनै थाउ ता भीतर हमें केवल ऑब्जेक्ट हमर जाई डाटा स्टोर करू राइट स्टोर करी रखे बाय चांस किछि क्रैश होला हमर सी ड्राइव जदी भी बूटेबल जोटा गोटे को हमें बूटेबल करा होवे आ सब को नॉन बूटेबल करा होवे राइट जोटा कि बूटेबल करा होवे सेते हमें कोन हमर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करू तो सिमिलरली एथे कोन करबा हमें EBS वॉल्यूम जेतले हमें नबा तो हमें सिलेक्ट करबा को वॉल्यूम केते टाइप रो केते हमक दरकार सेठी EBS वॉल्यूम टाइप्स आसुची राइट EBS वॉल्यूम टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ EBS अछि राइट वॉल्यूम्स नबा गोटे अछि कोन जनरल पर्पस SSD तो आज खाली थियोरेटिकल हमें बताबा नेक्स्ट क्लास रे हमें कंप्लीट लैब करबा प्रैक्टिस क्रिएट करबा हमर मशीन्स आ तापर जानबा तो मु EBS पूर्वरु ही तुमको देखे देता नहीं मशीन क्रिएशंस बट मशीन क्रिएट कला वाले जो मु EBS सिलेक्ट करी तो तुम जानि परम EBS टा कोन काहे के हम सिलेक्ट कले सेति पे ता पूर्वरु हम तुमको बतै दोछि EBS विषय तापर देन हमें गोटे छोटो मशीन्स क्रिएट करके प्रैक्टिस करिया राइट तो EBS वॉल्यूम टाइप्स कोन रहउछि
General purpose SSD, the GP2 type of category. General purpose balance both price or performance ratio. Sorry, 3 IOPS, 3 input outputs per second per GB with up to 10,000 IOPS. The ability to burst more than 30,000 or 3,000 speed. Okay. General purpose. Provisioned IOPS designed for input output intensive applications such as large relational and NoSQL databases. Relational and NoSQL. ଯଦି କି ତମର କିଛି database related applications ତମେ then you should go with provision because database ରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ କିଛି ତମେ applications ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତାର e-commerce application କିଛି ୟୁଜ କରୁଛ ବା trading application କିଛି ୟୁଜ କରୁଛ ଯୋଉଠି କି ତମର database multiple times hit ହଉଥିବ ମାନେ input ଆଉ output ଚାଲିଥିବ ମାନେ read ହଉଥିବ write ହଉଥିବ right ତ ସେଇ ଟାଇମ ତମେ କଣ କରିବ ନା then you should go with this provisioned IOPS use if you need more than 10,000 IOPS. Okay. ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଦେଖିଲେ ଦିଟା ଦେଖିଲେ first general purpose SSD ହେଲା କଣ solid state drive ତ ଆମେ ଯଦି SSD ନବା ତ ଆମର general purpose GP2 GP3 ବି ଆସୁଛି ଓକେ ଆଉ ହେଲା ଏଟା provisioned IOPS SSD okay then next ଅଛି throughput optimized SSD hard disk drive right hard disk drive SSD and जदि तमे big data warehouse বা log processing ପାଇଁ use करूछ then you should go with and this cannot be boot volume तो तुमको डिसाइड करिया पड़े तुम रिक्वायरमेंट तुम भलो भाबे बुझी करी तुम को टाइप रो EBS सिलेक्ट करियो मशीन क्रिएट कला बेले तुम जानिया पड़ी सब बुझी करी करियो नेक्स्ट अछि कोल्ड SSD जोटा कि cold hard disk drive lowest cost storage for infrequently accessed workload file server and cannot be a boot volume also file server किछि file store करिया पई तमे boot volume यूनी तर तमे रियल लाइफ रे तमे तो यूज करतो गोटे रियल लाइफ एग्जांपल दो गोटे बैंकिंग सेक्टर जदी तमे देखियो मुझे आगुर भी एग्जांपल देथली S3 रे राइट अलगाई रे तो तमे दे किछि कोन कले इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस राइट तुमको स्टोरेज टाइप रो नबो जोटा कि तमे फ्रीक्वेंटली एक्सेस होनो किसी records বা किसी data तमे स्टोर करिया पई चाहछो then you can go with this cold SSD तुम कम पैसा भी पड़ियो जे तो हमें infrequently access करूचे कम पैसा तो सही हिसाब तुम रिक्वायरमेंट को तमे फर्स्ट एनालाइज करिवो सही हिसाब रे तमे चूज करिवो राइट मैग्नेटिक स्टैंडर्ड लोएस्ट कॉस्ट पर gigabyte of all EBS volume types that use bootable magnetic volumes are ideal for workload where data is accessed infrequently and applications where the lowest storage cost is important where the lowest storage cost is important okay infrequently and applications where the lowest storage cost is important magnetic right तो এই সব বিষয়ে আমি EBS উপরে জানিলে right any doubt যা भी पढ़ले जते भी हमें आइडियाज गेन कले EC2 ऊपर एनी डाउट ओके तो हमें क्विकली तुमको EC2 विषय रे प्रैक्टिकली देखि दोछि केमती हमें यूज करिबा राइट तो फर्स्ट तमे consoles let's go to the console तो लॉगिन कला पर तुम कोन करबा EC2 सेक्शन तुम जानछ EC2 हमर केमती हमें जानि परिबा राइट तो हमर पर्टिकुलर सर्विस सेक्शंस को तुम जदि जाउछ सर्विसेज को तमे कंप्यूट सेक्शन रे we can find the EC2 in the compute section or else we can search it directly right so EC2 sections को वाली EC2 रे remember S3 is not region specific that means that is universal I am also universal right
EC2 is very much region specific. तमे जो region select करिवो तमरो सर्वर सही region रे सही region रो availability zone रे ही create हबो. Right? तो machine select कला बळे be careful, otherwise you have to pay more price for that. Okay, so different price ପାଇଁ different region ପାଇଁ different price. तो सही हिसाब रे तमे select करो. एठी देखो मु कोन करथिल ना लास्ट क्लास रे मु select कर देथिली कोन एशिया पैसिफिक सिंगापुर. तो एशिया पैसिफिक सिंगापुर सिलेक्ट ହେଇକି ଅଛି. ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ବି EC2 ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି କଣ ହବ ଏସିଆ पैसिफिक सिंगापुर ରିଜିଅନ ରେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ. ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର नियरेस्ट रीजन. तो जेतेबेले हमें मशीन क्रिएट करबा यू शुड बी वेरी केयरफुल while choosing the regions, right? You should be very careful. हमें कौन करबा बर्तमान गोटे मशीन क्रिएट करे बट ता पूर्व मते रीजन. तो मु मोर नियरेस्ट रीजन होची मुंबई रीजन, राइट? तो मु मुंबई रीजन सिलेक्ट कली. सिलेक्ट कर माने तमरो नुवा प्लेटफॉर्म तो मुंबई रीजन हिसाब रे तमरो डैशबोर्ड चेंज हो जाओ, राइट? तो ये डैशबोर्ड रे EC2 डैशबोर्ड हमरे बहुत सारा देखो EC2 ही हमको केवल 2 वीक्स ऊपर लागिवो EC2. जदि मु एई रेट रे एई डिटेल रे पढैली तले हमको 2 वीक्स केवल EC2 लागि जिवो. ओके, केवल EC2 पढ़िया पे EC2 रे जति सब फीचर जति सब ऑप्शंस मा जति सब जहां सब अछि नेटवर्किंग, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर बा लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग सब पढ़िया पे हमें 2 वीक्स ऊपर लागि जिवो, राइट? तो मु सेही सार हमें धीरे धीरे जे बट एते कंप्लीटली एडवांस सेक्शन को जीवानी. तो बेसिकली हम जति की दरकार हमें स्टार्ट करिया पे हमर डेवलप्स कोर्स हमें जति की सर्वर रिलेटेड जानिबा. तापर नेक्स्ट हमें धीरे धीरे EC2 इंस्टेंस को पुणी आसीबा पुणी सिखिबा EC2 इंस्टेंस ऊपर, राइट? तो जेतोल EC2 सर्विस तमे EC2 सर्विस सिलेक्ट कला तो हमको रे डैशबोर्ड दोची. तो डैशबोर्ड रे हमर रिसोर्स डिटेल्स दोची कोन रिसोर्स तमे सिलेक्ट करबा रन होची. जो इंस्टेंसेस 0 किछि इंस्टेंस रन होनी कोडी एशिया पैसिफिक मुंबई रे डेडिकेटेड होस्ट में किछि नहीं 0 अछि. की पेयर्स दीटा की पेयर क्रिएट हेछि. सिक्योरिटी ग्रुप्स दीटा. ऑटो स्केलिंग 000. ओके, ता पूर्वरु मु कहि दोछि EC2 इंस्टेंसेस कोन दोछि हमें जेमति जानिले. सॉरी, लेट मी जस्ट ओपन दिस व्हाइट बोर्ड. तो हमें जानथिले कोन 3 tiered EC2 इंस्टेंसेस केते 750 आवर्स फ्री यूज पे दोछि 7. ओके, सो एला एटा केतला 31 days 31 पॉइंट सॉरी एग्जैक्टली ता मु सेतले फर्स्ट ठीक करथली. तो 31.25 डेज, राइट? तो एबे कोन हला ना हमर कोन 24 आवर्स रे माने 1 डे हम हिसाब कले 24 आवर्स रे, राइट? तो 31.25 माने कोन सेटा एटा नॉट ईयरली. सेठी ही हमर कंफ्यूजन आस्तला. एटा मंथली, राइट? मंथली हमको दोची केते 750 आवर्स एग्जैक्टली देखिया बोले 31.25, राइट? 31.25 डेज हमरा एक्चुअली मंथली केते 31 डेज आसुची, राइट? तो को मासरे 30 डेज भी आसुची. तो से 750 आवर्स दोची मंथली यूज करे. तो हमें जति 750 आवर्स रु क्रॉस करी गले 755 सपोज हे गला. तो हमें कोन कला 750 कोन हैला 750 फ्री आउ जो 5 आवर्स रहिला चार्जेबल 5 आवर्स दे विल चार्ज यू, राइट? तो तमे सेते बेले कोन करना वाइजली तमे यूज करिवो. जो मशीन्स तमे नउचो से मशीन्स ताको तमे वाइजली यूज करिवो. केमिति तमे सिलेक्ट करिवो, राइट? तापरे आ गोटे होची कोन 750 आवर्स भितर से कोन करछि ना अप टू 30 GB रो EBS फ्री दोची. 30 GB रो EBS फ्री दोची. monthly 750 hours with 30 GB of EBS storage free.
ता माने तमे गोटे मशीन्स जदि नौच रन करूच 1 VM तमे यदि 1 VM नौच ताले 1 VM रे कोन करबो तमे 30 GB ऑफ EBS नहीं परिबो आउ ताकू constantly 1 month पिछाड़ा constantly तमे 1 year रन करि परिबो within 30 GB जदि तमे more than 1 year cross कलो right then you have to pay for that आ जदि 1 year रन कलो 30 GB रु जदि तमे 35 GB करि देलो then 30 GB free then 5 GB price 5 GB hourly basis से calculate करिवो per GB suppose 2 rupees से तो डॉलर रे कन्वर्ट करिवो बट मु रुपीस रे कहि दोची एज एन एग्जांपल हिसाब रे पर जीबी 2 रुपीस पर जीबी 2 रुपीस 5 जीबी गला 10 रुपीस आवरली तो तमे जति आवर यूज करिवो से हिसाब रे कैलकुलेट कर दो राइट से हिसाब रे प्राइस नबो 5 जीबी रो से प्राइस पके दबो तमे भाब जतले कहबन जे मु तो 1 ईयर फ्री थिला काहे मते चार्ज कला जेतु तमे मोर 5 जीबी यूज करूछ make sure that you will be under 30 GB of EBS okay how 1 year भितर तुमको यूज करि पर 1 year पर्यंत तुमको फ्री 365 days free and monthly 750 hours monthly 750 hours free so जदि बुझि पारलो 750 hours so जदि 750 hours monthly दोछि then प्रति मास 750 hours दबो ना yearly दोथबो ना देखो हमर एला केते 31 days right 31 days right into 24 hours केतला 744 hours तो ये कोन कहला yes मंथली से हमको दोछि 750 hours मंथली दोछि हमको 750 इवन नॉर्मली होछि 344 hours बट से एक्स्ट्रा किछ आवर्स टोटल 750 hours पे दोछि तो टोटल आवर्स से हमें कैलकुलेट करिबा 750 monthly into 12 months total 9000 hours is giving free 9000 hours that per तो अधिक year hours हबो नहीं ताटो अधिक yearly माने I mean 30 750 hours मतलब monthly 750 hours ही मिलिबो ताटो अधिक ही जीवनी तो सेही नहीं नहीं ताटो अधिक मंथली 750 hours हां मंथली से ताटो अधिक जीवन इवन then ताटो next अधिक month जाई परिबन हाँ तो नेक्स्ट मंथ फ्री है जीवो माने I mean अपन हाँ रिन्यू है नेक्स्ट जीवो मंथ भी हाँ नेक्स्ट मंथ भी फ्री सेति पाई ना सेति पाई से कोच कोन टोटल 1 year फ्री ओके अच्छा 1 year completely free राइट तो सही जो 1 year फ्री दोछि ता भितरे हमको यूज करिया पड़ियो 30 GB डेटा 30 GB डेटा जो EBS स्टोरेज था जदी देखो हमें तो जानि देले हमको 1 year पर्यंत तादरी भी कंडीशंस अछि केवल T2.micro T2 micro रो इंस्टेंस टाइप ता जदी हमें सिलेक्ट करछे एटा फ्री टियर भितरे आसुछ राइट T2 micro 30 GB EBS स्टोरेज बुझि पारलो 1 year yes पर्यंत मु चिंता नहीं गोटे मेसिन तमे कांस्टेंटली 24 hours रन करि पारिबो अप टू 1 year with 30 GB within 30 GB okay within 30 GB T2 micro इंस्टेंस यूज करि पारिबो जदि तमे T2 micro जार अलगा किछि नै गेलो then it's not free you have to pay for that मन रखि दो ठीक अछि तापर 30 GB तो ई जोरा भी मु कहूची वर्तमान गाइस नेक्स्ट क्लास रे क्वेश्चंस जेमितले पचारिबि तुमको ठीक अछि तो ए सब डिटेल्स थियोरेटिकल जहां भी पढ़ाला माजर वीडियो एबे संगे संगे क्लास पर अपलोड कर देबी थियोरेटिकल तुम प्रैक्टिस कर दियो नेक्स्ट क्लास
आमे लैब देखिबा ए लैब करबा पूर्व तुमको डिटेल्स पचारि आ तुमको बतैदेवी केमती मु काहे कि याकू फर्स्ट बुझेली तुमको ना काहे कि ना तमे जदी ठीक से वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट करी न पारिल देन अननेसेसरीली तमे पैसा दबो कारण तमे एबे ट्रेनिंग पर्पस रे यूज करछ राइट डेवलपमेंट पर्पस रे जोटा कि तमे चाहबो कि फ्रीली केमि तमे सिखि पारिबो ये करबो जदी तमे सेटा ठीक से प्रॉपर्ली मैनेज न करि पालो देन यू हैव टू पे फॉर दैट तो सेति हम तुमको बुझे देली जे एतिकी रोची ठीक अछि तमे यदि गोटे मशीन नेलो राइट जदी वन मशीन नेलो देन तुमको ए सब एतिक सब यूज कलो जदि तमरो दरकार पड़ला दुईटा मशीन्स जदि दीटा वीएम तमे नै गेलो दीटा इंस्टेंस तमे नै गेलो टू वीएम्स कोन कहबो एटी दीटा वीएम्स माने तमे जदि कांस्टेंटली 2 इयर्स टू दीटा वीएम्स चलेइलो तो पर मंथ गोटे वीएम हला 753 राइट तो दीटा वीएम से कोन करबो ना 750 टा दीटा वीएम तमे सपोज चलै दैछ अप टू 30 जीबी रो स्टोरेज राइट 30 जीबी रो स्टोरेज तो दीटा करछ ऑब्वियसली एटा 750 30 जीबी रो आ गोटे 30 जीबी रो दीटा स्टोरेज दीटा मशीन किनी दे माने क्रिएट कर दैछ से कोन कोन एटा को फ्री दे देला बट आर से चार्ज पकेबो and that is also hourly per GB से चार्ज पकेबो पर जीबी सपोज 1 रुपी भी धरो 1 रुपी भी धरो पर जीबी आवरली पर आवर पर जीबी 1 रुपी जब 30 जीबी तुम एक्स्ट्रा यूज कर जाइछ दीटा वर्चुअल मशीन नहीं जाइछ से कोन करिवो ना 30 जीबी आवरली बेसिस 30 हला पर आवर एटा गला 30 रुपीस हला इनटू 24 कन्वर्ट कर दियो से हिसाब रे जति गेला सति पे करिवो एटा पर डे राइट पर डे तापर पर डे गला तापर पुनी कन्वर्ट कर इनटू कर दियो 30 days बा 31 days जति सति तुम प्राइस दो सेति पई दीटा मशीन्स क्रिएट करछ मेक श्योर you delete if it is not required and आउ गोटे मन रखितो जदियो से हमको फ्री दउचंती यूज करबा पई त हमर काम हला कोन हम जेतेबेले यूज करले हमर यूज सरीबा परे हम कोन करबो ना मशीन्स को टर्मिनेट कर दवा ठीक अछि टर्मिनेट कर दवा बा मशीन को स्टॉप करि दवा तो सेति पई कोन होबो ना तांकर देखो हमको तो हमें फ्रीली पाई जाउचे बट देखिबो बोले तांकर गोटे डाटा सेंटर फिजिकली अछि गोटे जियोग्राफिकल लोकेशन रे राइट तांकर रीजन रे तो से माने तांकू मेंटेनेंस दउचंती इलेक्ट्रिसिटी लागुची ता पई इंजीनियर्स रहउचंती नेटवर्क यूसेज होउची तो आमे सिना एठी घरे बसी फ्रीली तांको मशीन्स को यूज करले बट दे आर पेइंग फॉर दैट आल्सो राइट तो जे तो से माने हमको फ्रीली यूज करिया दउचंती आम कटिस हिसाब रे हमको जदी हम यूज करूचे then it's okay do the practice and don't if you're not using it's good to stop it or if it is required then terminate also delete kar diyo right at least they can save some power or save some resources that side right ठीक अछि guys आज पे एते की थाओ हम नेक्स्ट क्लास रे हम जानिबा लैब केमती होची right that's all guys okay तो